तो आज मैं पूरी क्लास में लाइव करने वाला हूँ। ये छाटू रोज नहीं, 2 दिन के बाद आया लौड़े। तो फिर अभी कितने टाइम से कर रहा था, अभी जाके लाया बा। भाई मारा चोट गाली दिया पक्का जल्दी नहीं पड़ना। मेरे को देखेगा, अभी मेरे को देखेगा। भाई उन्होंने दिया होगा। वो तो गाली दिया पक्का, बहुत जोर से लगातार। तो गाना गा रहा था, गाना गाते गाते मन में गाली दिया। बच्चों को बुला के लाया पानी भर के। पानी लाया कोई? अभी चालू होने वाला है लॉजिकल लेक्चर गैंग। एक दो वापस से लिया खाने की चीजें। लाख 2 लाख का बोतल लेके मेरा बड़ा सबसे बेस्ट प्रोडक्ट पटकता है ये रही क्लास में बच्चे। सबसे पहले आया था आज, मैं आया फिर सीधा था। मैं सो रहा तभी मैसेज आया, कहाँ रहा है क्या बोला। हाँ मैं हाँ बोला कुछ नहीं करे, फिर बोलता है ये भी बोलता है हाँ। बोले क्या टूटी है लोग निकला। अबे लोग सीन में नहीं छोड़ता हम लोग। We back, we back. आगे जाइए पागल हो सब बैंक से, ये पागल हो सब बैंक ये साइड में मत, वो साइड इधर सही है, सही है, चुप जाए। अकेले बैठा है वो, चुटिए है वो में बाहर जाओ नया चेहरा वो मस्ता ही दे पर। हां वो तो मस्ती करता है। अरे नया चेहरा देख के उठाता है तो लेने का ऑप्शन देगा ही ना पर। हां इसका मामा को फोन लगाना इधर खिंचा। मुंह देख कैसा छुपा रहा था, छू दिया। ऐसा लग रहा लड़की है घंटा ऐसा फोटो लेके छुपा रहा है। तो कवर उतार के लेना, कवर उतार के तेरी को उतार के लेना आकर फिर वहां सब चार छूटिए एक नंबर। वहां चार लोग आए जा रहे, वहां कवर उतारो फिर फोटो खींचो फिर कवर लगाओ। तो देखिए अपने बहन जो बाथरूम भागने के लिए भी लोग फोटो खींच रहे हैं। हां वही बोले पॉइंट पे नहीं तो आगे रुक मैं आता हूँ उधर लाइव स्ट्रीम लेके। खागा खाएगा क्या मैं बैठ के उन्हीं को बंद की तरह। तू करना, तू करता है ना, सेम टू यू। कल आना चाहिए। वो लड़ लेता मेरा 2 बार कल मेरे को छोड़ा है पानी में बाथरूम में इसको लाफा दे मारा तूने उसको। उसका जो पानी था छूट उसका पानी जो खाते ना उसका जो पानी से पंप मार के तो मैं बेंच सबको उड़ा रहा था। तो सर पे गिरा, मेरे पैर पे गिरा। तुम लोग की जगह मेरी तरह उसको नहला देता मालूम है। नहला भी क्या लास्ट में ना मेरा कपड़ा उतार के जा रहा था लास्ट में नहला दिया एकदम। कांडो बंडी में था, ऊपर से बंडी उतार के तो हाथ में लेके इसको बहुत अच्छी बोली हाथ में कुछ है ही नहीं उसके अंदर। असल ऐसे मेरे को मजदूर है ना और राजू मजदूर उसका है बेंच पागल है। कुछ भी ड्रेसिंग सेंस में जो मिले बहन के भाई बहन का जो भी मिले पहन के चले आए। अच्छा है Motherfucker, lekker weer. पूरे क्लास में पूरा अकेला बंदा मैं मेरे क्लास में। एक छूती है नंबर 1 नंबर 2 16-17 इंच की टीवी लगाया उल्टा के मैं मेरे दोस्त को दिखा रही जो 23 अबे उसको कितना एक बोलता है इतने बड़े घर में रहते देख लो भाई घर की हालत देख के पता लग रहा है इतने बड़े घर अरे लौड़े इतना फिट था जब मालूम से पहले बहुत फिट था। लेकिन वो फिटता है तो तुम लोग उठाते क्यों रे बार बार? तो अपना लाइफ स्ट्रीम चला बात कर रहा मैं पता रेजर क्लासेस के बगल में जहाँ 4 गेट्स के नीचे एक फ्लैट है
मेरा फ्लैट इधर नहीं मारता वहीं पे कहीं लाइव आ जाओ गैंग। कार्ड लगता है मेरे जाने का इतनी बड़ी बिल्डिंग है कहाँ कार्ड से बंद है चाहिए हाँ हाँ तो बोलता नहीं मेरे पास नहीं रहता मेरा भाई लेके आता है बोलते मेरा भाई इधर मेरे कोई बिल्डिंग में रहता रहेगा अगर बगल वाली बिल्डिंग में कोई रहता रहेगा या तो वहाँ पे सारे में कहीं फ्लैट और लाइट मिला रहेगा पीछे साइड पे देते बहुत सड़ी का तो रस लेने के लिए तुम मुंह में डाला था दूध से रस हो गया पेट तो पीछे है जैसे पूरा नीला नीला लगे लीक हो गया। तीसरा चैप्टर पढ़ा दी मैंने चाचा ये चैप्टर तो सीखूंगा माँ की तो चाय कुछ भी हो इसके बाद सब रट्टा वाला रे रट्टा लेकिन माँ का उधर का टेंशन नहीं खा पाएगा मारूंगा एक के बाद नहीं मारता My hairstyle. Yo gang, yo check. What's up gang? What's up? Teacher I. Logical lecture. Good afternoon. बोले एक कागज से पढ़ाई Teacher I gang, teacher. आ रहा आगे हाँ बैठना है इधर ही अभी बोलेंगे तो जा फिर go fast bro ये ले आजा तू भी खुश टीचर आ गई गैंग तू मेरे को क्यों दे रहा बुक ब्रो मेरे को बुक क्यों दे रहा जा जल्दी जा दोबारा मत आ So your choice, bro. क्या कालू ने अमली नहीं करेगी उसने एक ही बंदे को देखी थी वो भी कालू If you mess me then I'm not give a fuck control not that she want to suck control the feeling but nobody control my flow I love him who don't like you say like my dick I like her when I go I'm a real bird with my fake bird I wanted to go red and grow not for this but nobody thinks everyone fake with my clothes smile in the face but snake in the clothes everyone must have to concentrate here. Now the two chapters we done. Logical chapter, lecture. So, there are 5 kinds we done, like truth table, method, short truth table, and so on. But for this year, we done the second kind of decision procedure. We are recognition of tautology or tautological statement format, non-tautological statement. Right. Indirect method, Right. which is given on the basis of Yeah. reduction, absurd. Yeah, We have to means show absolutely or give a functional statement form whether there is inconsistency and the statement form will be tautological. If there is no inconsistency, statement form will be non-tautological. And also, the chapter which is based on 5 kinds of functional compound proposition as it is we have to get it. The main connectives depends on it. Negative, that is the negation sign, conjunctive, dot sign, disjunctive, base sign, material implicative or conditional, horseshoe, and the last one equivalent, biconditional, that is triple dot. So then, whichever the connective which is given, we have to substitute to the main connective only and only which value? False value. False value. False substitution will be the first and necessary to every single functional statement form. Understood everyone? That is about the first chapter, decision procedure. So the second chapter, which is from which is V1 for the reductive group. There are 3 kinds we There were learned 3 kinds of last year, yes. Which kinds are there? Direct reductive group. The second वो one, मयूर की item है। conditional group, and the last one, indirect group. Direct reductive group, which it means by that is given step
deep study on rules of inferences and rules of replacement. There are 9 rules of inferences we have done: MP, MP, HS, DS, then simplification, conjunction, addition, CD, so this is about each one rule. The rule of inferences is applied to the whole statement only. It is very important statement. It is called objective. And another 10 rules like de Morgan law, material implication, commutation, ontology, DL. It is about the rules of replacement which can be applied to the both statements, part of the statement as well as whole statement, right? So deep study practices revision, which is a kind of direct deductive tool. And this year we done for the SYGC, right? The CPR IP, conditional proof and indirect. With the assumption we have, you have to proceed further. The first important step after conclusion when we are solving, CP or IP sum, assumption is the first important step to both of the sum, whether it is CP or IP. So CP, which is given on implicative or conditional state, right? Yes, antecedent of the given conclusion, which is assumption for CP or IP, CP. Now, the conclusion whichever we are given, that is with the consequent, that will be the final and last answer for a CP. Then we have to write the whole given conclusion with antecedent and consequent. And the last point which is given, IP, indirect proof, right? Indirect proof which is based on again the method of reduction or absurd, which we have to show their absurdity again. Denying the conclusion. When we are denying the conclusion, what will become? Negation to the whole given conclusion. That is called as assumption of IP. Understood everyone? Yes, the assumption of IP is what? Negation to the whole given conclusion means totally you have to say it is the method of principle of reduction ad absurdum. The term absurdum you have to remember. For which kind of sum? Which kind of proof? Indirect. Get it everyone? Now the answer of IP sum, any variable, any one variable or any one constant, which is given in the premises, which we have to apply the rule in the last step, conjunction. The first variable or constant affirmative, and the same variable that will be the second component, that is negative. So for example, P dot negation, there will be no answer. P dot negation Q. The same variable as per with their component 1, P affirmative, component 2 negation. Understood everyone? And only which rule will be applied for IP? Conjunction with the dot sign. So that we revised everything about the 2 chapters. Decision procedure and the second chapter, deduction. Yes? Now 4th chapter, which is B1. Anyone check previous photos? Shita said, yeah? You said it, huh? Anybody checked it or no? Which points are there? Already reading is done. Yeah. See, in this chapter we are going to do the propositional logic shortly. Then we have to understand what is the difference between propositional logic and predicate चेक logic. करो गाइस, चेक After करो that, गैंग. types of propositions are given. Yes, there are 2 types of proposition. Which they are singular proposition. Last year we done which one? The name only different. The name Which one only we done? different. Done. Simple. And Yes. last year we done another one. Miss. Okay. But Come, this come. year we are going to do general proposition. Proposition we are doing General proposition. So there are 2 types of proposition. Logical accelerate The and first check. one singular proposition and the second one general proposition. Singular proposition which makes an assumption about an individual. Individual means which term? Subject term or predicate term? Subject. Hey bro, hey bro. What is beautiful? Taj Mahal. Without subject term, without individual, the predicate term or quality or attribute will not be fulfilled. Understood everyone?
Yes, That's about miss. the preposition singular. Now the next point which we have to do it, this is very very important for it for the symbolization. General preposition. So general preposition which makes an assertion about a class. Class means what? Class means what, It is chat? quality or quantity? Quantity. So general preposition which are given in two types. One class of general preposition and two classes of general preposition. So within this two classes of general preposition, 1 and 2 as well, there are 8 prepositions are given to do symbolization. In one class there are 4 prepositions, in two class there are also 4 Four prepositions. preposition. So there are 8 prepositions we have to do study. Yes, it is one class of general preposition which is given universal affirmative, universal negative, existential affirmative, and the last one existential negative. That is about this all this thing of one class of general preposition, quality as well as their quantity. Now, two classes of general prepositions which are explained by Aristotle in traditional logic, which they call as categorical prepositions. Proposition, proposition. Proposition in the traditional logic. Yes? So these are propositions, names are given with the logical terms and logical kinds. A proposition, E proposition, I proposition, I and proposition. O proposition. Okay, A man. proposition, Okay. universal affirmative, E proposition, universal negative, then I proposition, particular affirmative, O proposition, particular negative. Negative. Whether you are calling existential or particular, the meaning is same. चलती क्लास में लाइव हो रहे The हैं quantity to be same. For existential, whether it is affirmative and negative, it is true about part of the class, it is Part true of the about class. some members of the class. Whether we call existential, that is in one class, and particular will be all in the two classes. classes. It is true about some members of the class. Some students are creative. Yes? Understood? Something is real. So these are the logical terms which are given to recognize this proposition. After that, very important point which is given in this chapter, symbolization of proposition. There is different method we can apply for singular proposition and general proposition. For a singular proposition, two methods are very important. Yes, ma'am. Individual Yes, concepts ma'am. which are given Yo, in chat, small yo. letters from A to W only. Right? And Chat it is something, applied bro. to which term? Subject term. Second one method, predicate constant capital letter or capital letters A to Z. Yes, that is applied to which one? Predicate term. So that is about individual constant and predicate constant, that is subject term, and that is for predicate term, and it is for singular preposition. After that, general preposition symbolization. Symbolization. It usually occurs with two kinds of quantifiers. Okay, man. This one is This one is universal universal. quantifier, and this one is existential Existential quantifier. 25. General propositions which are given with their quality as well as quantity. The quantity is must. Must. When it is true about Must. all members of the class, so which quantifier we need to substitute? Universal. Universal. Then the proposition, and when it is true about some members of the class, Yo, we chat have to some- substitute which chat something, quantifier gang. existential. This is not X. That you have to Bro. clear your concept. X into bracket, that is easy language. X into the bracket which means which quantifier? That is in capital letter. Yes, very everyone. And call please for a universal quantifier. So these are quantifiers which are to use and substitute for the both proposition. Universal quantifier for universal proposition, whether it is affirmative and negative doesn't matter. And this quantifier, existential quantifier, which we have to substitute for existential proposition from one class, particular
two classes, whether it is affirmative and negative. So this is about the whole symbolization of one class and two classes of general proposition. And after that, the method which is given at the last, very important, instantiation and what? Quantification or generalization. This is our last point of this chapter. In easy terms, instantiation means what? It is a reduction. And generalization means what? It is substitution. Then you will be understand this clearly to solve the sums. In this kind of method, both of the methods, it arrives quantification and reduction. Which point will be arrived? Quantification and reduction. In the quantification and reduction, there are four rules are given: UG, UI, EG, and EI. These are called two types of instantiation and two types of generalization. Universal generalization, Universal. existential generalization, and universal instantiation and existential instantiation. Clear? The whole chapter which is given on basis of all these points, whatever I taught you or said you in short. Now, we begin chapter 3. Now, propositional logic, last year we done in second chapter. There we have done propositions, simple and compound, even we done symbolization. Can you please tell me for the symbolization of proposition, which methods we apply to do symbolization? Yeah, first one was propositional, second one, then brackets and conjunctives, right? Yes, or operators. Now these 2 points are very important. And from this, first one very important. Propositional constants, which they are given capital letter A to Z. And propositional variables PQ, small letters PQ, RS and so on. Right? Understood everyone? The propositional logic is taken as one unit. Anybody knows that how we get symbolization for given singular proposition or the whole proposition? We symbolize it as a whole constant. Yes or no? How we get the symbolization? Can you please tell me, second? Loudly. For example, loudly explain. Taj Mahal is beautiful. I'm giving you an example. बच गए हम लोग बच गए. What we not done with this proposition in the last year? What we have not done in the last year? Has we taken any one constant capital letter? Yeah? For the whole given proposition? So what we not done? When you apply the quantity, Taj Mahal is singular. Yeah. And if you like apply the quantity of class, like I will give the example. That we have done or no? No. No. Very good answer. Clap for it. We use only one of the constant that is called whole given proposition. That is called as propositional logic. It's taken as one unit only. For example, Taj Mahal is beautiful. So here I substituted or I done symbolization with the capital letter T, that which considering to the whole given conclusion. Even we have not done symbolization with taking the subject term individually and predicate term individually with using which method? Propositional constant. The definition of propositional constant which is given, the propositional constant defined to substitute as whole. The term whole is there? Yes or no? Anybody remember? The term whole, which is very important for propositional logic. That's why propositional logic is taken
one unit, which is very important statement for the object. Understood everyone? In the propositional logic, there are arguments which are considering with a major premise, minor premise and conclusion. When the premises are true, conclusion must be. When premises are false, conclusion must be. On that kind of answer will get valid or invalid arguments. Right? When premises are true, conclusion also true, it will be valid or invalid? Valid argument. Whether it is deductive valid argument, also called as formal or material argument formal. Understood everyone? These basic points, please don't try to forget it. Now, another important point which is given, that is about again propositional constant. When there are premises which are given, major premise, first one, minor premise, and the what conclusion. What is the first premise? Anybody? Suresh is a doctor. What was the first premise? All doctors are rich. So here I have substituted A for all doctors are rich. Suresh is doctor. Therefore Suresh is rich. Right? All doctors are rich. Here I have not done individually the symbolization for subject term. All doctors are rich. Only the one constant I symbolize here for the whole. That is why the term is defined as propositional logic is taken as one. Understood everyone? With using propositional constants. There is no terminology will be used in various times. In which logic? Propositional logic. Understood everyone? There are no even propositions given with an explanation. In which logic? Propositional logic. Now, major premise is all doctors are rich, that I symbolize with A. Then Suresh is a doctor, that I symbolize with S. Therefore, Suresh is rich, I symbolize with the capital letter R. So, when premises are true, conclusion also true, the whole given argument will be valid argument. So, which is accompanied with a major premise and minor premise. Minor premise. Gives us directly the answer whether the argument is valid or invalid. So, that is about which one? Propositional logic. So, propositional logic is taken as one unit. There is no terminology will be used. What is logical terminology? What is the meaning of that? Whatever we are applying the symbolic forms individually to the subject term and predicate term, the connective, operator, everything like quantifiers as well, which is not given briefly in the propositional logic. Understood everyone? The basic concept of propositional logic. In propositional logic, how we do symbolization? Can you please tell me the answer? Yeah. To the whole given proposition or statement. Clear everyone? Here we are not doing individually the symbolization, that is for a subject term differently, again predicate term differently. Clear? We are doing the symbolization with an argument for a propositional logic. Take it as whole unit, one unit. Clear everyone? If you want to note it down, there is a given statement. Propositional logic is taken as one unit. One के आगे लिखो whole. शीट लिखना पड़ रहा है यहाँ. Now, the chapter which is given basis on predicate logic. The chapter is we have to do it briefly. What is the name of this chapter? Predicate logic. Predicate logic does not take as one unit. Why they say as this kind of statement? It is applicable for a predicate logic. Yes.
Clear everyone? It does not taking any one unit. Have to do symbolization or study in the different kinds of way. That is individual with the subject and individual with the predicate. For example, Surekha is beautiful. What is the subject? Surekha. Surekha. That is an individual. What is the quality of Surekha? Beautiful. So we have to do the symbolization with using individual constant and predicate constant. That is called as logical terminology, in which we have to use a predicate logic. Predicate logic does not take in one unit. Proposition logic is taken as one unit. Clear the difference between proposition logic and predicate logic? It is a kind of a study that is analysis of propositions. Analysis of proposition means what? Whether it is universal proposition, for example, everything is beautiful. It is true about how many members of the class, all or some members of the class, all. The term every is recognized and clearly understand it. That is true about all members of the class. So whether it is universal proposition from one class or two class, which quantifier we need to substitute? Only and only universal proposition. When I say some cats are white, it is true about some members of the class or some cats. So which quantifier necessarily need to substitute? Existence. When something is beautiful, also we have to substitute which quantifier? That is called as analysis of the proposition we have to apply in which logic? Predictable. So therefore statement form which is given, I will give you tomorrow the difference between proposition logic and predicate logic. So notes, yes. So then we have our answer with this. So proposition logic is taken as one unit. For the predicate logic does not taken as in one unit. Clear everyone? Concept is clear. Now another point that we have done with our arguments that I substituted ASR. ESR. Getting the answer valid or invalid. In this predicate logic, we have to do simply study all propositions and terminology which we have to use in symbolic form, like propositional constant, individual constant, predicate constant, both quantifiers, universal and existential quantifier, as well as one of the important points which is added. These are called as predicate variables. And which one? Another one, individual variable. These both are variables are called as place marker. Whenever we done all the basic beginning points we done, after that this point is explained very well. Now, after this difference between propositional logic and predicate logic, they give us two types of propositions. First one is singular proposition. Singular and second proposition. one general proposition. General So proposition. we have to do with singular proposition first. Singular proposition which makes an assertion about an individual. Very very important for objective for the तुम चुपके से लाइव कर रहे हो गैंग. singular proposition which makes an assertion about an it does not possesses attribute or quality. If it is making assertion about individual, so it does not possess any attribute or quality. Clear? So that is important about which term? Subject. Individual means for subject. Logically you have to think. Very easy. Now, singular proposition which makes an assertion about individual, so it does not possess the quality, attribute or predicate. It is divided into two kinds. The first one, affirmative singular proposition, and the second one, negative singular Negative singular proposition. singular proposition which affirms something about an individual.
क्या है हाँ New Delhi. न्यू दिल्ली That is our individual. Yeah, subject of what is the predicate of India. इंडिया So New Delhi, which is talking about what? It is individual. Yes or no? Which city is the capital of India? न्यू दिल्ली So that is something affirming in this given proposition. Yes, it is affirming something about subject of New Delhi. New Delhi is what? It is the capital of India. So which proposition will be there? Singular affirmative or affirmative singular proposition. समझ में आ रहा है चैट There are many propositions. समझ में आ रहा है पहली बार Tajmahal is in Agra. New Delhi is the capital of India. Surekha is beautiful. Thames is not an Indian river. Thames is not an Indian river. So this is about which one proposition? It is included into affirmative singular. Now, negative proposition. Which one we are doing? Singular negative proposition. Singular negative proposition defined as which is denying the quality, attribute, or property. There are three terms differently which is given to apply extra predicate. Clear everyone? In the given negative singular क्लियर proposition, एवरीवन it is क्लियर denying एवरीवन something क्लियर about एवरीवन quality and attribute or property, right? Right. London is not an American city. What is the predicate of not an American city? Yeah? Yeah. It is denied with not. Yes or no? Something is denied in this proposition for a quality. What is the quality? Not an American city. Whenever the term no, not is included, so it is what? Denying or accepting? Denying. Denying. So we are denying here in this negative singular proposition the quality, attribute or property. So that is called as which proposition? Negative singular proposition. And it is also does not contain any other proposition. That is a kind of singular proposition. Understood everyone? Yes. Last year we have done simple proposition defined. It does not contain any other proposition. There are no terms are included like and, either or, if, then, if and only. This is applied on the compound proposition or general proposition too. Understand the basic concept. First proposition everyone understood. Singular proposition which makes an assertion about an individual. Yes, it does not possess a quality, attribute or property. It affirms only about an individual. It is divided into two kinds. Affirmative singular proposition, negative singular proposition. How it defines the affirmative? Affirmative singular proposition which is making affirmation something about an individual. Yes? For example, New Delhi is the capital of India. So what is the subject of or an individual? न्यू दिल्ली New Delhi उसको है. What is that? It is the capital of India. Here. Now negative singular proposition which is denying something about the quality, attribute or property. It is directly denying in this negative proposition. For example, London is not an American city. What we are denying in this proposition? London is not an which city? American. Clear everyone? Understood both of this proposition? Shall we stop here? Tomorrow we'll do general proposition. चैट लेक्चर खत्म लेक्चर खत्म चैप्टर खत्म गैंग चैप्टर खत्म ये लॉजिक ना गैंग समझ में नहीं आता कुछ भी
Hey bro, hey, Star Gaming. Attendance time, attendance time. Your number? Next. 45. 42 present है? 6. 48. Then 43, 44, 47, 3. कम बैक जल्दी अब कम बैक होएगा। अभी ये सब्जेक्ट पेज से पीछे की तरफ मार के मार चुका करवा देगा। जब मैथ्स ही निकाल सकते हैं इसी का आते हैं इसकी निकाल मारते हैं। वो पागल है मैथ्स के लिए पता लास्ट में से एक महीना से मैथ्स का था 1 महीना तब जाके Attendance time. वो भी नहीं आ रहा वो तो मार खाया होगा मैथ्स के लिए। मेरी ट्यूशन टीचर तो 10वीं में मार उनको लाफा ही लाफा सबके सामने पूरी 10वीं बैठी है मैं अकेला मार खा रहा हूँ मैथ्स के लिए। 71 to 80. वो बुरा भी नहीं लगता है नहीं आ रहा तो मार तो खाऊंगा ही। इसी की वजह से इतना परसेंटेज आया था फिर उसका क्वेश्चन भी सही कर रहा था ऑफिस से लगा। Next 78. Next 73. 78 and 73. Next 76 next. It will up to 90. 87. Attendance, attendance. Fuck. ज़्यादा परसेंट लाऊंगा मैं बिगड़ जाऊँगा इससे नहीं पड़ता। Next 97, 98. Please start the number. 94. 95, 94. Next 95. Next 291. next 291, gang. 97 and 98. Please start. Some you mama who man. 90. I'm a record. 8. 98. Attendance time, bro. I said 297 and 298. Who given me 297 का number? Absent है कि present है? That's why I asked 252. I am asking you 97 for number and 298. 301 to 10. Next. 6, 7, Shoot 8. guy. Oh, it is इसकी पर्स में Next. 304 304. जैसे अच्छे बोलता हूँ 1 नहीं करता तो क्या हुआ 1 करता वो तो करता है 1 291. तो सिंपल है भालो ऐसे ही बोलता है भालो ऐसे ही बोलता है उसको क्या मालूम है झाड़ू को छोड़ती हाथ का है बाल जो है ना इसको सही से लगा कौन से झाड़ते हैं इतनी दाढ़ी वाली नहीं काट के निकाल के सही करता नहीं मानता है सही बोल रहा है बैक्स कर ले बैक्स राइट सर लेजर सर्जरी करवा ले वो सड़ी के तू चूतिए वैक्स एक बार इधर किया था इतना खून निकला ना बहन को तुम क्या बताऊँ मैं खून निकलते हैं हाँ तो तू करवाए कभी करवा मालूम पड़ेगा नहीं मिला अबे तो बोलना और तो इससे कभी भी पूछेगा ना तेरी गांड मारने के लिए कुछ ना कुछ तो बोलते ही रहेगा ऐसा मत पूछा कर टैलेंट हक्कल जगह जा उधर जाके काका इधर नहीं उधर टैलेंट है उधर नहीं सौ के तो लौटे 100 के तुम लोगों को पढ़ने का शौक है कुछ नहीं पढ़ाई लिखाई करो बड़ा आदमी बनो पढ़ाई लिखाई करो बड़ा आदमी बनो कोई गैंगस्टर से मैटर लो मार देगा चल फिर आप अभी मतलब मयूर को दुकान फाड़ इसकी सुनेगा ना ये तू खड्डे में जाएगा और ये घर में जाएगा इसकी नहीं सुनेगा बहुत बड़ा मादर चौधरी है मेरे को बोलता भाई किधर है हाँ मैं इसको फोन किया हेलो किधर है मैं निकल रहा हूँ हाँ ठीक है मैं भी निकल रहा हूँ इधर आया मैं हेलो किधर है हाँ रुक जा निकल रहा हूँ अब इतना बड़ा मादर चौधरी ना भी है
इतना दूर आज इतना तेरे को आज सही में मैंने तेरे को 2 बार फ़ोन किया, अच्छे तो दिखा सकता हूँ। मेरे में आया नहीं, कुछ बजा नहीं, आया होगा, मैं नींद में रहा हूँ। नहीं आ रही है। ठंडी लग रही है इधर। आज गर्म करता हूँ गरम इसके बाद करता मैं ऐसे गर्म कर जाता है वो चालू किया भाई। कहीं पे मुझे ख्याल नहीं रहेगा तुम रैपर बना देगा, रेप हो जाएगा। हाँ ए आया कालू आया, कालू आया। तेरा लाइव स्ट्रीम देखा रहा था उस दिन बेंच पे। मेरी माँ बैठ के बाजू में आप लोग की गाली सुनते हैं अपन दोनों। लेक्चर में बैठते गाली देने बैठते खाओ ये सिद्धार्थ भाई मचा कि नहीं दे भाई सब्सक्राइब किया उड़े लगाने वाली। कुछ ज्यादा पीछे नहीं बैठ गए मुझे, आधा आ गया आ गया आगे बैठे पीछे बैठेगा ना। आ गया ना ये पीछे तो बैठेगा। पीछे रहेगा आई रे टीचर इकोनॉमी। ये बटला भावना दिखेगा ए बाबू ने बहुत बड़ा एलिफेंट टावर है क्या रे? एल्फिट टाउन है, मैं भी भूल गया था। नहीं नहीं नाम भूल गया। बहुत बड़ा टावर है क्या? बोलो ना भाई। लाइट बंद कर देंगे तो दिखेगा। हो क्या होगा मालूम पड़ा, अंधेरे में तेरे गाड़ फंस गया। ये तेरी मार ली है क्या? मेरे कैसे मारेगा, मैं खुद काला हूँ। मतलब दोनों काले काले आपस में। हाँ तो है, तू भी है, तू भी है। ये थोड़ा गोरा है, चिकना मैं है। तो आज तक कभी नहीं बोला चिकना लवड़ी, तू मेरे बाप में हाँ तो हूँ ना, क्या हो डायरेक्ट चिक मुंह पे डाल दे इसके लिए गोरा हो। भाई झोली बाप पे शर दिया मार, मैं उतना तो नहीं सुनता। छी अभी तेरे मुंह पे बोल रहा है, हम लोग नहीं सुनते कुछ भी। इसके लिए गोरा हो गया। वो नाता था उससे बाप बस हो गया, इधर चढ़ाओ, चढ़ाओ। ये बाबू वाला बॉडी वाला तो बॉडी वाला वाला बॉडी हाँ तो गोरा तो हूँ ना भाई, अच्छे गोरा हूँ। तेरी तरह काला नहीं हो लवड़े। बॉडी वॉश। साइज जी मेरा भी तेरे बाप ने तेरे अंदर दामन डाला था क्या? तेरी माँ के अंदर सबके ऊपर तू जा रहा है, तेरे से बात सब करते काले, हैं, तू अकेला बोला है। तू भी काला है ना? हाँ तू काला काला ये मतलब तुम लोग को बोल रहे हो क्या? सबके अंदर जाएंगे। कालू नारियल का झाड़ आ गया। झाड़ में की आग लग जाएगी पक्का। बाकी तू तेरा बाल ऐसे क्यों करके रखता है? कैसा हो जाता है रे? मैं ऐसे छोड़ देता हूँ। मेरे बाल भी कितने मस्त दिख मारने का फटाफट नजर लग गए ना खाए एक बोलू ऐसे लौड़े लग जाते हाँ सही बोल रहा है, झड़ रहे हैं मेरे बाल। इसके लिए ऐसा ऐसा बाल बांधने का नजर भी नहीं आना चाहिए। तेरे को क्या लगता है? तू बहुत बड़ा हीरो लगता है, एकदम छपरी लगता है। मेट्रो में तो जाना ही नहीं, उतार नहीं देंगे चुप, तेरे को। सच मत बोल, सच मत बोल। तो मेट्रो में ही उतार देंगे। लोकल आता लोकल से सर को बोलता है मेट्रो से आता हूँ, इंडियन को मेट्रो से तो आता हूँ लोकल से मेट्रो तेरे बाप आते हैं। फिर सर बोलता है वो तकलीफ होती होगी ना धोने। हमेशा बाल्टी उल्टी मिलती है। अबे वो रिकॉर्ड है, वो स्क्रीन भी रिकॉर्ड है। अबे वही जो तुम लोग की ले रहा था ना, इसको भी ले रहा था ना, ये तो मालूम नहीं। हर इसमें देख, बीच बीच में देखना। You gang, fuck you gang. ये चाचा और थर्सडे को चल मालाड का मालाड नहीं मलून बोलून थर्सडे को मालूम है इसे तेरे को क्यों लेके जा रहा है? थर्सडे वो भी दिन भी क्या मत चॉइस की। तू चल चलेगा ना कोई चल रहा कंपनी चलू मैं चल रहा कौन है सा फ्लेवर? लौड़ा ही है एक काम बता, कपड़ा तेरे को लेने, जो भी सामान तेरे को लेना, हम लोग को दिखाने लेके चल रहा है ये ले लेने का तो जाना थोड़ा शेयर इधर से Oh my क्या? eye, my eye, my eye, my eye. आँख में लड़ क्या हो गया? आँख में क्या हो गया? लड़ नहीं बैठी थी लगता हिला हिला के डायरेक्ट आँख में छोड़ दिया भाई ने आँख के फोड़े हो गए ए फिर तेरे को बोलेगी वो ये करके अरे उसको नहीं मैं तन में कुछ चिल्ला रहा हूँ वो बड़ा मारा मारी कर रहा है पाइनएप्पल बोला शुगर है, बोला शुगर। मैं मारे पीछे वाले को देख कैमरे में मस्त बात मैं एक लाफा छोड़े ना, 4 बार ऐसा घूम घूम के नाचे। तू मार खाता उसका 4 बार लोग ऐसा खड़े हैं, सबका मुंह में लिखा है 1 2 3 4। तू लिया था? फिर पूरा मुंह लिया था भर जाएगा। तेरे को बराबर मालूम है इसको बराबर मालूम है लिया था सबका लाइव इन क्लास गया तो मेरा फोन जाएगा गैंग।
बहुत ज़्यादा रिस्क पे लाइफ कर रहा हूँ। ये लाइव स्ट्रीम में बोलूँ, ये लाइव स्ट्रीम टीचर लोग ने देख लिया गलती से, तो अपनी गाली गलत अपनी टीचर लोग आपको गाली दे रहे। अटेंडेंस टाइम इकोनॉमी पहाड़ों के Next. 247। 247 अरे मेरा 240 नहीं, मेरा 207 है रोल नंबर। अभी आईडी कार्ड पे देखा चेंज हो गया। हाँ वो मालूम है, चेंज नहीं उसमें गलती है। 207 है। हाँ एवढे इस क्लास में कैसे होता पहले भी तो फोन करता छोड़ होता मेरा अटेंडेंस लग रहा है मेरा पास, कोई तो लगा रहा है। नेक्स्ट उनका लोग Next. अलग है। हाँ उधर क्यों बैठा नया बाप बना ले कौन उनका भाई चूतिया होती है, किसी को भी कुछ भी बोलता है। है नहीं अपने पहले अपने साथ बैठा था ना उधर। नया बाप बना ले लड़ने देखा बाप नहीं चुप मारेगा साला। तुम्हारी का बाप नहीं हाँ मैं जब सही भी तेरे लोग बाप को कोई मारे ना पता लगे कुत्ते की तरह, पुलिस वाले को तो सब रहेगी। अंडर ऑर्डर माफ किया नंबर लेता है बीच बीच में मत मिस भी बहुत हार्ड है। और तू सॉफ्ट है। हाँ सॉफ्ट है मेरा, देखो कैसा मालूम पड़ा थे। रहेगा ना जाने के टाइम मेट्रो में। देख मयूर को सब मालूम है कौन क्या करता है। उस दिन देखा ना वो बस वाले का खूब ब्रोक कर रहा था। सब मालूम गियर पे गाना लेकिन मारता है, चल गियर वो पे कर रहा बैठ था, चल वो कर रहा था, तूने कैसा अंदर में देखा? गाना मारा। अरे ये तो गियर पे बैठ जाता है ना। हाँ। लेगा पागल है, मेरे पागल घर पे बैठेगा। फील लाइक आई एम गांड में गियर घुस जाए तो पापा जाके घर में पकड़ से निकालेगा। जब आपने गिर निकल ऐसे मत तो बोलना काय के लिए मुंह फुला रहे, शांति से बैठो तो बैठे फालतू में ये बेइज्जती छोटा कर रहे हो। गहरी में ना वो जगह मत तू। पहला लौड़े दांत बना माता दांत तो है तुत्ता कम बोलता जाता है। नहीं उल्टा बोल ये रुक मेरा नंबर आ रहा है, मेरा नंबर आ रहा है। इसके ये बोल जाते इधर है बोला इधर देख। ये क्या बोला देखो जब कर छिप गिर गया। What the fuck you saying bro? आगे उसके गाल मर गए तो देखा था। टाइम है चश्मा लगा रुक ब्रो लॉजी वाली दोबारा से लेती नहीं है पागल, ये इको वाली हाँ नहीं ये क्या बोल रही है? उसके गाल मर गए कान मर गए उसके। अरे बोलने तो दो। 94 291 क्या बोल रहे थे छिनाल लोग तुम्हारी गांड। 291 कल से ऐसा बोर्ड लेकर खड़े रहे। नहीं खड़े रहूँगा, और इसके आगे 3 तो खंड लिखना नहीं लिखूंगा, हाँ तो नहीं करूँगा। मुंह में लेके बोल। नेक्स्ट जोक मारो लवड़े जिस पे हंसी है, किसी के जोक पे कूदी हंसी है। नेक्स्ट जोर से गाना क्या गांड मरवा रहा है क्या? नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कर रहे थे? नंबर लगवा दिए नेक्स्ट क्या कर रहे थे? नंबर लगवा दिया क्या? हाँ ये लिखने दो मेरे को। वाह मैं पढ़ाकू बन गया। पढ़ाकू बन गया बहुत सारी के गांड मारो पढ़ाकू बन गया। गांड लेना फिर मयूर बोलते गांड ले अबे पूरी बात तो तुम लोग सुनते नहीं है, हाफ नॉलेज बहुत डेंजर होता है पागल।
लेकिन तू उधर क्यों गया? इधर बैठना पीछे। उसको पीछे वाइब नहीं मिल रहा था। उसको अपने वाइब में आने का। मांडी पर बैठे का? हाँ हम लोग बिठा सकते हैं, पावर है हम लोग को। यो गैंग अजीत सिंह का लैंड घुस गया था क्या रे? जोर से गाना बोल के था। अजीत सिंह का लैंड नारा से बाहर। What the fuck? चले नहीं वो थोड़ी बोला, पीछे के दोनों किचन में वो थोड़ी बोली दोनों उधर बैठ जा, उधर बैठ जा। चला चीज को भी तो ये बनाने का आंसर आता ये रंडी का मोचा में आंसर कालो कालो Hey, which chapter is going on, bro? Yes, either it. Chapter 3. A. Beginning. Okay, this chapter. The chapter meaning or demand, Types of demand. types of demand, economical lecture, bro. And other interesting. ये which chapter is? ये कौन सा है? कौन सा पेज नंबर है? 24, 24, 24, 24. Law of demand. Answer repeated. A very important question for the board exam. Okay. Now chapter third B. Okay. कम से कम 15 marks तक ये third A और third B से आता है. 15 marks. 20 marks objective. 20 marks objective. कितने हुए? 45. समझ में आ रहा है? थोड़ा दिमाग चलाओगे तो ओके. तो ऑब्जेक्टिव की कल्पना क्या? ऑब्जेक्टिव के 20 नहीं आने वाले. ऑब्जेक्टिव में 10 मार्क्स काउंट करो. फिर अगर घर के 10 करो 20 और दूसरे कुछ लिख के इजी पेपर में पेश करोगे. Increase in quantity demand, decrease in quantity demand. ओके. सपोज आप रबर बैंड लोगे तो उसको स्ट्रेच करोगे तो लंबा होगा फिर वापस Yes, miss. यहाँ पे भी डिमांड का लेवल जो है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डिमांड. इन प्रीवियस चैप्टर वी स्टडी अबाउट द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. When the price increase, demand are Increase. and price decrease, demand are Increase. तीनों relation are inverse. But in this chapter, totally something different. बहुत सारे कोर्स के चैप्टर हार्ड है. इस कंफ्यूजन हो गया. कोई कंफ्यूजन नहीं. इतना हमको चैप्टर थर्ड ए जो है वो प्राइस एंड डिमांड का रिलेशन बताता है. इंक्रीज प्राइस, डिमांड डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज, डिमांड इंक्रीज, रिलेशन आर इनवर्स. ये चैप्टर थर्ड का फॉर्मूला है. एंड देन इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर थर्ड बी. Necessity of demand. Wait. This chapter you have already studied the law of demand, which shows the inverse relationship between quantity demand and What the fuck, babe? the law of demand has got extent of a change in demand due to change in the price. Thus, law of demand aids to explain the quantitative relationship between price and quantity demanded. Therefore, Professor Alfred Marshall explained the concept of elasticity of demand. Concept of elasticity of demand. Listen. In previous chapter already we study about the demand and price. Explained it. But something is different. Which comes from? क्या
इसको और एक्सप्लेन करना ओके तो मार्शल में कुछ मेथड्स होते हैं मेजरिंग द रेसिपी ऑफ डिमांड कौन से मेथड से कर सकते हैं ओके और उसके डिफरेंट मेथड्स हुए तो शायद ये चैप्टर थर्ड ए और बी अगर आप लोगों को पास होना है इकोनॉमिक्स ए और बी एकदम कोई एक लाइन भी छोड़ना नहीं है और रट्टा मार के पूरा चैप्टर है बाय हार्ट ओके क्योंकि in this chapter 3 questions may be asking for long questions. What is the meaning of elasticity of demand? Then explain the type of elasticity of demand. What is the meaning of elasticity of demand? And explain the type of price elasticity of demand. And explain the method measuring elasticity of demand. Otherwise, intermediates of elasticity of demand. The 4 questions is 101% of डिमांड का और एक का क्वेश्चन नहीं आता तो ये 4 क्वेश्चन ओके सो फर्स्ट ही सेज कि एक्सप्लेनेशन में इन्होंने इंक्रीज एंड डिक्रीज एक्सपांड डिक्रीज परसेंटेज होती है और उसको परसेंटेज हाउ मेनी परसेंटेज चेंजिंग डिमांड ये एक्सप्लेनेशन करने की हमने तैयारी की इसमें प्रोफेसर अपनी थियरी और एक्सपांड Okay. concept of elasticity of demand. Okay. Concept of elasticity of demand. The term elasticity indicates responsiveness of one variable to the change in the other variable. Elasticity of demand refers to the degree of responsiveness of quantity demand to the change in price or एक पैराग्राफ लिखो this complexity of demand indicate okay कि one variables में अगर चेंज होता है तो other variables में कितना परसेंटेज चेंज होता है फॉर एग्जांपल सपोज टी प्राइस इंक्रीज तो कॉफी की वेरिएबल में सेकंड ऑप्शन उसमें कितना परसेंटेज चेंज हुआ यानी कि सपोज द कॉफी प्राइस आर इनडायरेक्टली सपोज टी प्राइस इंक्रीज इनडायरेक्टली कॉफी डिमांड आर इंक्रीज तो हाउ मेनी परसेंटेज इंक्रीज टू दैट प्रोडक्ट ओके एक ही इफेक्ट एक वेरिएबल की इफेक्ट दूसरे वेरिएबल पे कैसे यानी कि एक वेरिएबल की अगर प्राइस इंक्रीज होता है फॉर एग्जांपल सब्स्टिट्यूट अदर वेरिएबल में क्या इफेक्ट होती है हाउ मेनी परसेंटेज क्लियर द पॉइंट दैट सेकंड अकॉर्डिंग टू मार्शल elasticity of demand is greater Elasticity of demand of greater amount demanded the price must monitor for a given volume price and quantity demand for not monitor for given price in price. कितनी quantity में price increase कितनी quantity में changes होता है इसमें describe the community की demand वो उन्होंने explain करने की try की इसमें प्रोफेसर मार्शल आप लोगों को अगर कंसेप्ट लिखना है तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल को टिक मार्क करो कंसेप्ट कोई टिक मार्क करो सिर्फ कोई बीच वाला आगे पीछे वाला नहीं ओनली मिडल कंसेप्ट ऑफ रेसिपी ऑफ डिमांड समझ में आ रहा है ओके इट इज क्लियर टॉकिंग अबाउट डेफिनेशन दैट रेसिपी ऑफ डिमांड इज अ टेक्निकल टर्म व्हिच इज डिस्क्राइब अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांड फॉर all rising price or rising price अगर प्राइस इंक्रीज होती है rising price ओके तो कितनी क्वांटिटी में कितने परसेंटेज चेंज होता है in the quantity demand for or rising price in the other word is the ratio in the percentage okay ratio of percentage change in quantity demand of the commodity to percentage change in price अगर प्राइस में चेंज हुआ तो हाउ मेनी क्वांटिटी ऑफ डिमांड में चेंज होगा ऊपर
the income money. जो भी changes होते हैं it is because of income. Necessity of demand means जो भी changes होते हैं it is because of income. Okay, because we study about the income necessity of demand. Clear the point? Yes or no? नहीं समझ में आया. Listen. It refers to decrease how many percentage. Decrease how many percentage. Change in quantity demand. Change in quantity demand. Demand में कितना change होता है? डिमांड में कितना चेंज होता है? Sorry, change in demand to a change in income only, not change in price, but change in income से demand में कितने percentage change है? समझ में आ रहा है? Income से demand में how many percentage change in demand? Main is the income. Okay. Other factors including price remain unchanged. Other factors are stable. No change in other factor. जो भी change होता है किसमें होता है? Income. Okay. So it is expressed E Y. Y is the income. E Y. Income E Y is income है ना? Okay. Percentage. Change in quantity demand upon percentage change in income में कितना परसेंटेज चेंज हुआ उसके कारण क्वांटिटी ऑफ डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज हुआ. सपोज योर इनकम इंक्रीज क्वांटिटी डिमांड इंडायरेक्टली यहाँ पे क्या हो सकती है? इंक्रीज हो सकती है. सपोज योर इनकम डिक्रीज परसेंटेज चेंज इंक्रीज ओके इनकम में चेंजेस हुए तो यहाँ पे डिमांड में चेंज परसेंटेज समझ में आ रहा है? डिवाइडेड बाय क्वांटिटी सॉरी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम. हाउ मेनी परसेंटेज चेंज इन योर इनकम एंड योर इफेक्ट कहाँ पे दिखाई देगी? क्वांटिटी ऑफ डिमांड. क्लियर हो रहा है? देखो ये चैप्टर क्लियर नहीं होगा ना तो समझ में नहीं आएगा. यस और नो? यस. फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्या होता है? आपको देखना बहुत बढ़िया वापस रिपीट करो. फर्स्ट इट सेज इन प्रीवियस चैप्टर we studied about the demand and price change. Demand and price relation are inverse. ये समझ में आ गया? फिर उन्होंने एक्सप्लेनेशन किया इंटरनल के पॉइंट. These are the meaning of necessity of demand. तो मैंने आपको एक ही मार्क्स का पॉइंट लिखा था दूसरा लिखने राइट. तो वो क्या कहते हैं कि हाउ मेनी परसेंटेज चेंज ये क्वांटिटी ऑफ डिमांड कैसे चेंज होगी दूसरे अदर वेरिएबल. अभी मैं अदर वेरिएबल का और एग्जांपल देती हूँ. सब्स्टिट्यूट टी एंड कॉफी दोनों एक दूसरे में सब्स्टिट्यूट है. ये भी एक वेरिएबल है ये भी एक वेरिएबल. इसके इफेक्ट इस पे कैसे समझ में आ रहा है? ओके. तो व्हाट दिस इज सपोज दिस वेरिएबल प्राइस आर इंक्रीज automatically this variable demand are increase. इसकी प्राइस इंक्रीज होती है तो सब्स्टिट्यूट क्या है? चाय की जगह पे क्या है? कॉफी है. तो ये चाय की प्राइस इंक्रीज होती है तो लोग क्या लेंगे? कॉफी. तो ये अदर वेरिएबल पे इफेक्ट हुई. इसमें प्राइस में इफेक्ट होने से अदर वेरिएबल पे इफेक्ट हुई. यस और नो? तो अदर वेरिएबल पे क्या इफेक्ट हुई बेटा? इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ इसका डिमांड? इंक्रीज. इंक्रीज हुआ. समझ में आया? तो वैसे ही प्रोफेसर मानते हैं कि हाउ मेनी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड तो किसके कारण होता है? PCR प्राइस से इनकम से और क्रॉस. क्रॉस क्या होना चाहिए? पहले हम लोग क्या क्रॉस व्हाट वी स्टडी अबाउट इनकम इलास्टिसिटी. एनी चेंजेस इन डिमांड because of income. इतना याद रखो. Any changes in demand because of income. So we write down the formula. Elasticity of income
Next, अभी ये symbolically है ना, आप लोगों को exam में तो पूछे तो लिखने आप लोग का meaning जो है ना, triangle it means represent the change, Q it means the original demand, Y it means the original income, and triangle C it means the changing quantity demand and changing income of a consumer. ये लिखने की जरूरत है, सिर्फ formula और ये three methods पूछे तो ये three methods में भी shortcut में आई, ओके? तो सीधा आप लोगों को शॉर्टकट है, समझ में आ रहा है? इनकम मेथड एनी चेंजेस बिकॉज ऑफ इनकम, ओके? सेकंड पॉइंट इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस। अभी सेकंड पॉइंट कौन सा है? लो क्रॉस। तो क्रॉस में क्या कहते हैं? इट रिफर टू अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ वन कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी, यानी कि परसेंटेज elasticity cross demand, it means percentage change in quantity demand of A, जो मैंने अभी कहा है, T and quantity, मैंने इसमें आपको एग्जाम्पल दिया है। इतनी शांति है क्लास में, चिल्लाना गांड उठा के देख रही कालू को, तो कैसा दिख रहा है? तो को दिख रहा भी नहीं है। अभी किससे भी बात करता है मालूम है? Which is doing nice. Once a new got jealous, motherfucker dies. Percentage change in quantity demand of A commodity, for example, abdominal after activity, okay? And percentage change price of B, it means the military example coffee. अभी बराबर से, okay? और A means the original commodity and B is the other commodity. Original commodity is the tea and other commodity is the coffee. Okay? So what is it? Symbolically. ये सिंबॉलिकली मतलब इसी पढ़ाई I'm great almost the somebody. What is the meaning of price elasticity of demand? Third component. And explain the type of price elasticity of demand. तो आपको थर्ड पॉइंट से बराबर रीड करना है। ये थर्ड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके? तो they give us a pie diagram. Price, I will explain the other point also later, but price, it means says 5 rupees. Why I say 5? Price 5 rupees because pie diagram. 5 rupees याद रखोगे। Price it means ₹5 का 5 rupees मिस्टेक क्या करेंगे? 5 rupees it means 5 diagram, right? 5 diagram. अभी ये 5 diagram मुझे सब हो गया। अभी मैं थीमेटिक ऑप्शन याद करूँगी। सबसे पहले type of price elasticity of demand. First diagram is parallel to x-axis. Diagram पे ना मैं सिखा रही हूँ। Parallel to x-axis. यहाँ हमने सामने किया था। Parallel to x-axis. Second is
party. But 50-50 plus more demand distance more Vindhya and demand distance Or less. less. 1, 2, 2, 3. 3, Oh. 4. Easy? याद रहेगा? 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. 5 is the demand distance Three count. आप गलती नहीं करो राइट फर्स्ट वन इज द एग्जाम में ऐसा कौन सा है करो सब लोग फर्स्ट वन इज द यस थैंक यू सेकंड वन दिस वन थर्ड वन This one. 50 फोर वन फोर Time. ऐसे ताली बजा या इसको कभी डायग्राम में Na 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 na. Na 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 प्राइस na. वर्ड आया Na टाइप na ऑफ na. प्राइस इट्स अ फायर डायग्राम कभी भी गलती नहीं होता दुदू क्रॉस ऐसा आंसर बता देंगे गई नहीं I'm creating a monster somebody. Woo! Look at my talent. Look at my shit, he's gone. Na na na. Na 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 na. एक ही चीज हिलाना 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 है पागल हो गया तब जाके
देखता कितनी अच्छी दिख जाए ना फिर भी नहीं। इंस्टाग्राम पे तो अब आता ही नहीं। आप आया होगा एक दो दिन से नहीं देखा तो इंस्टाग्राम पे आता ही नहीं। हॉटस्पॉट चालू कर। ना 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 ना, अबे ये चूतिए। वो ती परसों करेगी. ते पण काय ऐसा करना ओ हे मेरा बॅग से चार्जर ला. ना 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 ना. पासवर्ड अभी रखना पड़ेगा। तेरी माँ का फोटो घर वाले बोलेंगे पासवर्ड बेटा। अरे मैं लिखता हूँ। हमको नहीं आता है क्या? मैं लिखता हूँ। ए, क्या निकाल रहे रे दुकान से? अरे हॉटस्पॉट देना रे छूती है। चूतिए, मेरा लैग होएगा फिर. मैं क्या चाचा का लेना हॉटस्पॉट. ओए हॉटस्पॉट देना. अबे क्या हिलाएगा क्या? हम नाम नाम. ये चाचा शायद मैंने कुछ पापा बोलते जब कॉलेज जाने का मेरे हेलो. मेरी नई ड्राइंग. मेरी ड्राइंग. क्या है ये? बिना बाल काटा हुआ बाल नहीं काटा. कैसी है? जो अंदर है ना वो भी छोड़िए. कैसी है? एक नंबर। ये क्या है? वुल्फ है। चूतिए लाए ने. दोनों का डिफरेंस मालूम ना 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 जाओ ना ना ना. सामने लेके खड़े हो। हाँ उन अभी तक. ये आता खेल रहा यार. हाँ मैं बैग से निकालना भूल गया. अरे आज चल रहा खेलते ना. ना 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 ना.